सो हेलो भाई और उनकी बहनों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक और बार फिर से, जिसका नाम है JEE 5। एंड आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ easiest approach to solve inclined projectile in under like 2 minutes, nearly 2 minutes. Okay, so we'll do every question, like most of the questions of inclined motion, in nearly 2 minutes. So before starting the video, I have an announcement for you guys. So basically this is the announcement. I'm gonna start a free membership like from IIT, you know, that is me. Okay, so it is only valid for the first 5 people who already commented on my video, like the prior videos. Okay, so I'll mentor you throughout your whole like full JEE prep, right? So my aim is basically to produce top 100 rankers like these 5 people. To this, ये मेरा aim है. Okay, so if you are if you come under this, then DM me on Telegram with proof of comment, and this is, you know, the my username, right? So DM me here, and more opportunities will come most probably in the future. Like, I cannot be sure because maybe I'll die, you know. So yep, I'll try my best to provide more opportunities like this, so be sure to subscribe. Okay, so without further ado, let's begin the video. सो इसमें मैंने अब फर्स्ट इलस्ट्रेशन ली है कि दिस इज़ द फर्स्ट इलस्ट्रेशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट? हमें क्या करना है, हमें ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है कि ये क्या होगी अगर दिस इज थ्रोन विद द वेलोसिटी u एंड दिस इज अल्फा, दिस इज थीटा, राइट? दिस इज u. ओके, सो या आई हैव टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस? ओके, अगर मैं बेसिक मेथड से जाऊंगा, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जी लेना पड़ेगा, जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा, दो इक्वेशंस आएंगी एंड दोनों में क्वाड्रेटिक में भी बन सकते हैं, क्योंकि ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से होगा, राइट? एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो एंड दिस इज ऑल्सो नॉट जीरो इन बोथ द केसेस. सो बहुत बड़ी इक्वेशंस बनेंगी एंड इसका आंसर बहुत लंबा बनेगा. सो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम वेक्टर ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं. कैसे? हमें इतना पता है कि जो एस वेक्टर होता है दैट इज इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए टी वेक्टर का, नहीं सॉरी, ए वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर, राइट? दिस इज व्हाट इज नोन टू अस. ओके, सो एस वेक्टर क्या है यहाँ पे? दिस इज एस वेक्टर, राइट? दिस राइट हियर, दिस इज एस वेक्टर. ओके, and ut vector is what? Ut vector is a just scalar product of this u vector, इसका scalar product. Okay, right? So let's do this, right? And this. Okay, yep, let's just take this, right? This is what, this is u vector into t, right? ये वो है. ओके, अच्छी राइट हैंड में दे देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए. ओके, यू टी, दिस इज यू टी. ओके, एंड हमें पता है कि जो जी है वो नीचे की तरफ है, राइट? सो दिस इज हाफ जी वेक्टर इनटू टी का स्क्वायर. ओके, सो ये वेक्टर ट्रायंगल हमें पता चल गया. सो अब हमें इसको सॉल्व करना है. वो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आई जस्ट टेक दिस, यू नो, एक सेकेंड. मुझे ये पता है कि दिस इज अल्फा, राइट? दिस इज अल्फा, सो दिस इज ऑल्सो गोना बी अल्फा. ओके, this is alpha, right? This is 90, yeah, this is 180 minus theta plus alpha plus 90. Okay, so ये मुझे क्या देगा? This will give me 90 minus theta plus alpha. ओके, सो ये है. अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे साइन रूल लगा सकता हूँ, राइट? मैं यहाँ पे साइन रूल लगा सकता हूँ एंड मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि एस के अपोजिट का एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा अपॉन अल्फा. ओके, सो एस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू यूटी के अपोजिट एंगल क्या है? यूटी डिवाइडेड बाय 90 साइन ऑफ 90 प्लस, सॉरी, 90 प्लस अल्फा एंड हाफ जी टी स्क्वायर के अपोजिट एंगल क्या है? थीटा. ओके, हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट? अब ये दो इक्वेशन से मेरे पास टी इजीली आ जाएगा, राइट? यहाँ से मैं टी निकाल सकता हूँ. सो टी क्या होगा हमारा? टी विल बी इक्वल्स टू टी, सॉरी, टी बिकॉज जीरो नहीं हो सकता, सो t will be equals to, so time cannot be equals to 0, so time equals to u into sine theta, 2u sine theta divided by g into cos alpha. This is time, right? So we got the time, and then finding displacement is not that much of a big task, because what we can do is s equals to u by these two equations, right? We can use any two equations, basically these two and these two also, but वहाँ पे t square का term आ जाएगा. So yep.
into u sine theta divided by g cos square alpha, because यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है cos alpha, so that will be multiplied, right? And this thing will go here. Sorry, this will go here, right? Into cos theta plus alpha, right? So this will be displacement, and this is so easy to find. Like basically, it wouldn't even take 2 minutes to be honest, because solution तो सिर्फ इतना है. This is the solution. ठीक है. And ये basically diagram तो आप easily बना सकते हो. This won't take even a minute, right? This won't take some. This will just take some seconds, and voila, we are here. Okay. So the next illustration I'm gonna solve is, so guys, this is the next illustration I want you to solve yourself. Okay, so try it and I'm gonna give you the solution. Okay, just pause it and try it. So yep, now I'm gonna give you the solution. Okay, so basically the question says we have to find the condition such that this projectile it hits perpendicularly, right? This has to be equals to 90 degree, okay, to the this incline, right? So basically we all we are also gonna do this by using vector triangle. Okay, this is v, right? And this is 90 degree, okay, and this is u, this is theta, okay, this is 90, right? This is known to us, okay, and we also know that v vector equals to u vector plus a vector into t, right? So we can build a vector triangle through this, right? Basically, this is gonna be the vector triangle u vector, this is theta, right? This is v vector, okay. This is v vector that is perpendicular to this, and this is equals to gt vector, right? G vector into t. This is v vector, okay. So we have to find like the condition so that it hits perpendicularly, okay. Yeah. So we also like gonna use, vector triangle and stuff, but basically this is also alpha. This is alpha plus theta. So I'm gonna just write this whole uh, as alpha plus theta, theta plus alpha. Okay, yeah. So now basically we know that this is, wait a second. This is theta, right? This is alpha. This is 90. So this will be this angle will be 90 minus alpha, right? So I'm gonna write this as 90 minus alpha. So this will be equals to alpha. Okay, now we'll use sine rule. Okay, gt divided by sine of alpha, and alpha will be cancelled if we add this. So this is just gonna be 90 plus theta, right? And next we'll use u because u is known to us. Let's remove this vector sign because we just gonna use the length, and we're not gonna use the vectors itself. Okay. Yep. U divided by sine of alpha. Okay. So t is gonna be equals to u into cos. Wait a second. Into cos of theta divided by g into sine of alpha. Now this is the relation we need actually. This is the relation, right? So basically now the question is solved. This is the relation we need that satisfy this condition. Okay. And all of this can be done pretty easily by using vector triangle. So like the other students are gonna solve this, like most probably they're gonna solve this using, this g, and this is g sine theta, this is g cos theta, blah 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 blah, all this stuff. But that's gonna take them ages to solve this question. And like I'm providing you this level of content for free, so guys, please make sure to subscribe the channel and like the video, so I can also provide these kind of videos in the future. Let's meet in the next video, inshallah.